Now students, we are going to start the last part of this chapter, that is the transport of the substances in the plants. As about the humans or other animals, that we have done already, and here we are concerned with the plant. So we will start from the very important process, that is the photosynthesis. As we know, the photosynthesis is a process by which the green plants prepare their own food in the presence of the sunlight. Okay? And during the process of the photosynthesis, plants prepare their own food by making the use of the carbon dioxide which is present in the environment and released by the human beings and other animals. Okay? That will be taken up by the green plants. And in addition to the carbon dioxide, plants need to have the water also, and which will be absorbed by their roots. As you can see over here in this diagram, this is the root, and roots hairs are attached to the root. ये root है, root के साथ ये hairs attached है, and it is further embedded. It is shown over here that it is embedded in the soil. So soil particles are surrounded. So soil particles have surround these root hairs. Whenever the root hairs will insert into the soil, it will help in the absorption of the water and minerals from the soil. So soil में minerals वगैरह भी हम add करते होते हैं, ठीक है? In the form of the like fertilizers also we are used to add, which increases the fertility of the soil, and in turn it has to put the positive impact on the growth of the plant. Okay, and then these root hairs, by taking the water from the soil particles and absorbs the minerals like nitrogen, potassium, and phosphorus. Such kind of the minerals can be absorbed by the soil, can be absorbed by the root hairs from the soil. Okay, now the question is how further it transported to the plant body. अभी plants ने तो receive कर लिया, ठीक है, sorry, root hairs ने भी absorb कर लिया, and this water, let me tell you, this water, okay, say water will also be added over here. तो पानी में मिट्टी में हम पानी भी ऐड करते होते हैं, तो that water will be translocated or transferred, absorbed by these root hairs. तो ये जो root hairs है इनके अंदर चला जाएगा. From the root hair it will get transported into the other tissues of the plant body. Definitely other tissues में transfer हो जाएगा, and there are conducting channels in the plants which help in the absorption of these kind of the minerals and water absorbed from the root hairs. अभी जो भी कोई plant body होती है उसमें suppose which is a plant body, and there will be two conducting channels. One this, another one will be this. Suppose this one is the xylem. Two conducting channels. This is the xylem, and this one, it is the phloem. These are the two conducting channels, and they are collectively called as the vascular bundles. जो plant body होती है उसके अंदर two vascular bundles होती है. First one is the xylem, and next one is the phloem. X-Y-L-U-M, xylem. Okay. Next one is the P-H-L-O-E-M. Okay. When PH comes together, you know that it produces the sound of F. Okay. And then phloem, and then these are called the conducting channels or vascular bundles. In दोनों को बोल सकते हैं. इनमें से just consider it as a xylem, and next one, this one is the phloem. Okay. So these two conducting channels are mainly responsible for the transport of the materials or substances into the plant body, throughout the plant body, from the root to the leaves, and from leaves to the roots, and whichever how this will be transported by conducting these two conducting channels. First of all, this water, as I have told you, water and minerals will be absorbed by the root here, and they will move through this passage, and there will be the water molecules again. It will get dissolved into the tissues or cells of these surrounding the layers. इनमें absorb हो जाने हैं, and then it will be stored over here in the xylem. Xylem is mainly that conducting channel which is useful or which is responsible for the conduction of the water. And phloem has to conduct the food, and xylem will conduct the water.
ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड दैट फ्लोइंग, यहाँ पे भी एफ की साउंड है, इधर भी फूड में भी, तो यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लोइंग विल कंडक्ट द फूड एंड जाइलम विल कंडक्ट द वाटर प्लस मिनरल्स। You can, along with the water, it has to absorb the minerals also. Okay, and then when it comes with the in contact with the xylem, it will get absorbed over here in this vascular bundle, and then xylem. It is the responsibility of the xylem to transport further up towards the body of the plant, ठीक है, because these xylem bundles will be present almost in every part of the plant, ठीक है, from one xylem it moves to the another xylem, from second to third, third to fourth, okay, in this way it will be transported. Now the question is how this water will rises up. This we will do under these topics, ठीक है, okay. Next one here is the process involved in the absorption. अभी कौन सा प्रोसेस है जो फूड की एब्जॉर्प्शन में या वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज दी ऑस्मोसिस, ओके। एंड ऑस्मोसिस, OSMOSIS, as you have studied in your earlier classes also, osmosis is the movement of the water molecules through a semi-permeable membrane from the region of the higher concentration to lower concentration, okay, higher concentration to the lower concentration, okay, because that region of the higher concentration, as you know, here the concentration of the minerals and water it is more, but here is a less because it is inland, तो यहाँ से जो osmosis के through जो है movement को allow हो जाता है, it will causes the movement, तो यहाँ पे osmosis होगी जिसके थ्रू क्या होगा, it will get absorbed into the tissues of the plant body, okay. And next, ascent of sap. Ascent of sap is that mechanism which causes the absorption of the we can say, or it produces a kind of the pull which is called the suction pull. As you know, the plants are used to there is another process, they are used to release the excess amount of the water through the aerial or exposed parts. उनके leaves वगैरह से जो भी exposed part है, branches है, green branches and leaves से क्या होता है, जो पानी है वो निकलता रहता है automatically when it exposed to the sunlight, ठीक है, उसको हम evaporation बोलते हैं। आपको पता है evaporation is the loss of the water in the form of the water vapors, ठीक है। जब भी कोई पानी सन के कांटेक्ट में आता है तो वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको evaporation कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, तो evaporation होता है, another one is the transpiration, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, next that I will tell you later. Here ascent of the sap produces the suction pull. Ascent of sap की वजह से ascent of sap is just the movement of the we can say minerals and water from the lower region of the higher concentration to the up, means along the plant body. This यहाँ से तो roots है, ठीक है, roots में से कहाँ जाएगा, it has to move the up towards over here, तो यहाँ से जाएगा in the xylem, clear। एंड यहाँ पे ये दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए हैं, दैट विल बी ascent of sap and osmosis, just keep it in mind, okay जी। एंड now there is minute line between the evaporation and transpiration. Transpiration is the loss of the water, evaporation is also loss of water, there is a very fine line between these two definition में थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज बोथ आर सिमिलर, ओके। ये है evaporation is loss of the water in the form of the water vapor, और ये क्या है, loss of the water, ये तो है but through the semi permeable membrane, okay, loss of the water through the semi permeable membrane or through other structures like the stomata. As we know, in the leaf there is a stomata present, so जो ऐसे किसी proper structure से loss of water हो, that will be called as the transpiration, okay। As you know, this is the stomata pore, and these are the guard cells, there is a
each stomatal pore is guarded by a pair of kidney shaped guard cells. ठीक है, that's why they are called guard cells because their function is to guard that opening of the stomatal pore. ठीक है, okay. Then loss of the water होती है but through the stomata. ठीक है, जब पानी only stomata के through जब water का removal होता है from the plant body. Clear? Whichever the excessive amount of the water will get absorbed by the root hairs and it will be there in the xylem tissue or xylem vascular bundle. It will be removed by the process of the transpiration from the plant body if it is not needed over there. Okay. Next one. Significance of the transpiration. What are these? First one is it has to produce or it produces the cooling effect. Like as I told you during the explanation of that integumentary image we did about the skin, है ना, integumentary system. तो वहाँ पे क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स लगे होते हैं, वो पर्सपिरेशन कॉज करते हैं, कूलिंग इफेक्ट रिजल्ट होता है उनसे. ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन में भी ऐसा ही होता है. जब स्टोमेटा के थ्रू, जस्ट इमेजिन इट इज अ लीफ एंड देयर आर द स्टोमेटास. ठीक है, इसके अंडर सरफेस क्या होते हैं, स्टोमेटास आर प्रेजेंट एंड जब यहाँ से पानी जो निकलेगा पोर्स के थ्रू निकलेगा, इट विल मेक दैट सरफेस कूल डाउन. ठीक है, तो वो सरफेस क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई इट रिजल्ट्स इनटू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सरफेस. ठीक है, एंड कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा एंड बाय डूइंग सो इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट बॉडी और प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द एक्सेस हीट और एक्सेस वी कैन से द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड otherwise that strong radiations can harm the soft plant parts also. ठीक है, and next if the rate of the transpiration increases, it causes the rate of the water of the absorption also increases. अगर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है, अगर ट्रांसपिरेशन प्लांट बॉडी में फास्ट हो जाती है, it means that the rate of the water absorption will also increase. ठीक है, ट्रांसपिरेशन फास्ट होना मीन्स the loss of the water is getting faster. It means the loss of the water absorption also will start now immediately so as to replenish that loss which is happening through the stomatal pores during the process of the transpiration. ठीक है, उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए तो वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट भी जो है प्लांट बॉडी का it will get increase. Next one, upward movement of the water. Like transpiration is called the loss of the water through the stomatal pore. Okay, and ये stomatal pores लीव्स तक तो पानी तभी पहुंचेगा ना अगर ये रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर पूरी प्लांट बॉडी में आएगा. देन दिस ट्रांसपिरेशन causes like there is a phenomena to pull that water. It is called the ascent of sap. हम अभी कर चुके हैं. ठीक है, ये क्या करता है, एक पुल क्रिएट कर देता है जिससे जो डाउनवर्ड रूट के अंदर पानी होता है, रूट ने जो अब्जॉर्ब किया होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में से, दैट विल बी सक्शन्ड अप, वो ऊपर की तरफ पूरी प्लांट बॉडी में चढ़ जाएगा. ठीक है, एंड उसको क्या कहते हैं, सक्शन पुल कहते हैं. पुल का मतलब क्या है, वो खींच लेगी पूरी प्लांट बॉडी, रूट्स में से पानी ऊपर खींच लेगी. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इट फैसिलिटेट. तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर है वो इंक्रीज हो जाता है. मींस द प्रोसेस ऑफ द एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप जो है उसका रेट भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. एसेंट ऑफ सैप, दिस सक्शन पुल भी क्या हो जाता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सो दैट इट कैन सप्लाई द मोर एंड मोर वाटर टू द एरियल एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द plants so that the transpiration can take place over there. Next one is the translocation of the food. As we know, the translocation of the food means that the transportation of the food from one part of, to the another parts of the plant body. Okay, as we know, the food is prepared by the green plants, basically like the green branches and the green stem also can perform the photosynthesis, green leaves and all these are involved in the process of photosynthesis, so they are mainly responsible for the production of the food in the plant body. And that plant body needs to have and those aerial and exposed parts which have just performed the process of the photosynthesis, तो ये चाहिए कि उनको पूरी प्लांट बॉडी में भी एक एक टिश्यू को फूड सप्लाई करना होता है. तो उसके लिए क्या होता है, प्लांट बॉडी में फ्लोएम वेस्टिकुलर बंडल, ठीक है, which will help in the translocation of the food.
तो जो भी ऊपर से खाना बन के आएगा ना, लाइक यहाँ से क्या है, प्लांट बॉडी एज आई टोल्ड यू, ये सारे का सारा, ठीक है। जस्ट यहाँ से हो गया प्लांट, ओके। तो ये प्लांट बॉडी हो गई हमारी। तो यहाँ से जो भी इनके लीव्स के थ्रू जो एरियल एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, जो अदर ब्रांचेस है, ग्रीन स्टेम के थ्रू जो भी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फोर्स बना रहता है ग्लूकोज, इट विल रीचेस it will comes down so that it can be transported to the different parts of the plant body, ठीक है। तो different parts में यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो फ्लोएम के फॉर्म में, फ्लोएम के अंदर वो स्टोर होके आ जाएगा, ठीक है। फ्लोएम will be present at the different locations in the plant body similarly to the xylem, ठीक है, जैसे xylem होता है। एंड यहाँ से क्या होगा, मूवमेंट आगे से पीछे आएगा, तो फोटोसिंथेसिस तो एक्सपोज्ड पार्ट्स करेंगे एंड दे आर लोकेटेड ऑन द अपर सरफेस, ठीक है। तो इन दिस वे इट विल हैपन, इट वाज ऑल अबाउट इट। एंड ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन देयर आर द स्पेशल सेल्स इन्वॉल्व्ड व्हिच आर कॉल्ड द सीव ट्यूब्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स भी होते हैं फ्लोएम के अंदर। सीव ट्यूब्स ऐसे वन अबव द अदर अरेंज्ड होते हैं सो दैट दे कैन टेक द दैट अमाउंट ऑफ द फूड व्हिच इज स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी। Okay, see, it was all about your transport of the substances in the plants. Thank you. Hope you understand.